Hey guys, welcome back to my channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader, and today's video is another study vlog, and I will also show you all my night routine in this video, and it's also going to be a very productive video, and I am sure that by the end of this video you will feel extremely motivated. So make sure to subscribe to my channel if you haven't already, and without wasting any more time, let's get right into it. So these are my tasks for today. I have already completed 2 chapters and I am left with 3 more tasks. So let us complete that. I made this to-do list like afternoon mein, isliye I could not study much. Anyways, let us start with life processes. If you have been on my channel like regularly, then you would know that I am an Udan batch student and मेरे को अभी अपना biology करना है, so I will do that from my Udan batch की लेक्चर्स एंड बायोलॉजी में हमारा लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो चुका है, बट मेरे बायो में काफ़ी बैकलॉग्स हैं क्योंकि मैंने लाइफ प्रोसेसेस के भी सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं एंड मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक भी लेक्चर नहीं देखा है क्योंकि वो चैप्टर भी स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए आई डिड नॉट डू इट, बट आई विल डेफिनेटली कंप्लीट इट इन माई समर ब्रेक. एंड अभी उड़ान का भी ब्रेक चल रहा है, सो देयरफॉर आई कैन कंप्लीट माई बैकलॉग्स देन एज वेल. So right now I will do transportation of food in plants, excretion in humans and excretion in plants वाला topic, because इससे पहले के सारे topics मैं कर चुकी हूँ. I don't know why I have not checked them off, but I have watched these lectures. So this lecture and this lecture I have not watched. So I'll just watch this one because I feel like ये सबसे important topic है. So then I was making my notes while watching the lecture, and while I do that, let me tell you about this amazing offer which is going on in PW. PW ने अभी अभी लॉन्च किया है अपना उड़ान गोट बैच, वो भी सिर्फ 2100 रुपीज़ में, जिसमें आपको 2 फैकल्टीज मिलेंगी, दी ओजी फैकल्टी एंड द गोट फैकल्टी. और उड़ान गोट बैच के साथ उड़ान 2026 बैच का फ्री एक्सेस मिलेगा. So this is the right time to enroll in the Udan Goat batch. Other than that, daily 2 live classes only of 1 hour 15 minutes each, and then you will be given PDF notes, daily assignments and video solutions as well. There is also a doubt engine जिससे तुम कभी भी doubts पूछ सकते हो, and peer to peer solving भी होगा for totally interactive vibes. और यही नहीं, अगर आप क्लास 9th में हो so आपके लिए है नीव गोट बैच with free access of नीव 2026 बैच, and क्लास 11th के लिए है उदय रीलोडेड बैच with free access of the Uday 2026 batch. इन बैचेस पर और भी डिस्काउंट चाहिए, so don't forget to use my coupon code ASH10, and इन सब बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Do check it out yourself. Now I'm almost done with the topic and अब मैं लास्ट टॉपिक पे हूँ चैप्टर के. इसके बाद मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड मेरे सारे नोट्स वगैरह ऑलरेडी बन चुके हैं. सो आफ्टर दैट आई विल बी जस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम माई क्वेश्चन बुक्स. ऑल राइट, अब हमें पढ़ते पढ़ते 1 आवर हो चुका है एंड मेरा बायो का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है. लेट मी शो यू द लिटिल राइटिंग्स दैट आई डिड व्हाइल आई वाज डूइंग द चैप्टर. दीज आर नॉट माय नोट्स, बट rather I always do this when I'm watching a lecture because it helps me focus better, it helps me study for longer, and it also helps me to remember stuff better. Plus, if I ever want to revisit the lecture, I can just revise from the notes. So this is a very helpful technique which you all can also use. So these are the topics which I have done. मैंने transpiration in plants वाला topic किया है, and after that I did excretion. So I practiced the diagrams and all. बहुत ugly सा बना है, just ignore that. But yes, मतलब मैंने बहुत roughly बनाया था क्योंकि I was watching the lecture while doing it. But I'm glad that I've completed the chapter. Now we will be doing trigonometry, and मैंने अगर तुमने मेरा previous video देखा होगा, you would know that I've already completed one exercise from NCERT. So today I will try to do the next exercise, and I will try to learn उस exercise के concepts. I mean, I have already completed the chapter, but I did that before 10th even started. So I need to make sure कि जो भी मैंने पढ़ा था वो सब मेरे को याद है या फिर नहीं, इसीलिए we're going to practice it once again. So now I'm doing trigonometry from NCERT, and पहले जो मैंने first exercise थी उसके 2 questions छोड़ दिए थे, तो I was completing those first, and after that I revised the concepts of the next exercise. I have already done this, so I was just revising, and after I was done with that I started with the examples, and then I started with the exercise as well. And इस बार मैंने पूरी exercise complete करने के बाद ही छोड़ा है, and I was super glad कि मैंने पूरा complete कर लिया. I really like this chapter. It is extremely fun, and I like कि questions बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं होते हैं. They're mostly simple and mostly same concept ही होता है.
नाउ आई हैव completed trigonometry as well और मैंने सेकेंड एक्सरसाइज कर ली है और उस एक्सरसाइज से पहले वाले सारे एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं. एंड ऑनेस्टली आई एम ग्लैड दैट मेरे को याद है चीजें जो मैंने पहले पढ़ी थी, क्योंकि आई डोंट हैव टू memorize the ratios of the specific angles once again, क्योंकि I have memorized them before class 10 started. So that was very very helpful and I would suggest कि तुम अगर like अभी class 10 में हो, so like summer break में ही like वो ratios वगैरह वाला topic complete कर लेना, ताकि तुमको बाद में like cram ना करना पड़े, because it's better to practice during your exams than to like start the topic fresh for the first time, and that's just what I recommend and it's really helping me out क्योंकि मेरे को ratios अब already आते हैं. एंड ऑब्वियसली मतलब मेरी पूरी एक्सरसाइज 1 गो में नहीं हुई थी, कुछ क्वेश्चंस मेरे को वापस करने पड़े थे. सो आफ्टर आई एम डन विद दिस चैप्टर, मे बी आफ्टर अनदर मंथ व्हेन माय एग्जाम्स आर ओवर, आई विल डू इट वंस अगेन, क्योंकि सब कुछ करेक्ट नहीं हुआ. एंड आई स्टैंड बाय माई वर्ड, जब तक मेरे से पूरी एनसीईआरटी 1 गो में करेक्ट नहीं हो जाती, आई डू नॉट स्विच टू एनी रेफरेंस बुक. सो मैं पहले इसको पूरा कंप्लीट करूंगी एक और बार आफ्टर आई डू दिस, लाइक आफ्टर ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम्स के बाद मैं वापस से इसको करने वाली हूँ एनसीईआरटी से. एंड उसके बाद आई होप 1 गो में हो जाए एंड देन वी कैन मूव टू आवर रेफरेंस बुक्स. एंड वो भी सबसे पहले मैं एग्जाम्पलर करूंगी बिफोर आई मूव टू एनी अदर रेफरेंस बुक. नाउ ओनली 1 चैप्टर इज लेफ्ट विच इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड अभी फिलहाल 11:25 हो रहे हैं. सो yes, अभी फिलहाल 11:25 हो रहे हैं एंड आई थिंक आई शुड डू some of my night wale rituals before I move on to like the next chapter, क्योंकि what if after completing the chapter I feel really sleepy and then I forget to do the more important stuff. So first of all I'll be doing gratitude journaling. I like to do this every single night and it is really really helpful because it keeps my happy hormones like zinda. So yes, and it is very important to express gratitude to लाइफ एंड टू एवरीथिंग. लाइक आज के दिन अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ एंड आई थिंक ओवर 200 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, विच इज सच अ ट्रेजेडी एंड इट्स जस्ट सो डिसहार्टनिंग टू नो दैट. बट देन अगेन वी ऑल शुड बी सो ग्रेटफुल दैट वी गेट टू live our lives to the fullest every single day, and we should be extremely grateful to everyone who are working so hard to make our lives easier. And it is very very important to express gratitude, honestly. Like if I don't express gratitude to even the littlest things, like as little as getting like clean drinkable water, because a lot of people do not get that. So being grateful for something as little as that is extremely important, like for your own mental health and peace, and it hardly takes 2 minutes to do. So अगर तुम अभी वीडियो देख रहे हो, I expect you to go and bring a little notebook or post-it or anything and write at least 3 things that you're grateful for and actually express gratitude for it, because not everybody gets electricity, water, something as basic as food, something as basic as access to education. People really don't get that stuff and लोग actually तरसते हैं इन चीज़ों के लिए and we get it, so we generally tend to ignore it and we focus on things that we lack. Like ये नहीं करना चाहिए. You should first of all be grateful for everything that you have. So right here I have my journal. Let me flip the camera and show you how it actually looks. So this is my journal and इस पे लिखा हुआ है be the energy you want to attract, and I truly believe in that. So now let us do some gratitude journaling. Now I'm just going to do my journaling. मैं कोई भी prompt वगैरह use नहीं करती हूँ. I just write 3 things that I'm grateful for and like I write reasons कि why I'm grateful for it. And कभी कभी अगर मेरे को मन करता है, so I just like decide to write a whole paragraph of gratitude on like any one topic or any 2 topics of my choice. But it's no fixed routine. I just do whatever I feel like doing on that particular day. And yes, now I'm done with the gratitude journaling part, and now I'll be doing my skincare, which is very very important, especially raat mein. So let me show you what my skincare routine looks like in the summer. So first of all, before washing my face, I like to brush my teeth, and over here I have my brush and I have my Colgate. So सबसे पहले I wet my brush. Yes guys, I wet my brush before
putting Colgate on it. Anyways, very unnecessary information, but here we go. Now there is Colgate on my toothbrush. And then I'll just brush my teeth and I'll meet you after I do that. Anyways, after brushing my teeth, which I have now done, I will wash my face, and I wash my face with Dove ka soap bar, and this is the soap bar that I'm currently using to wash my face. मैं इस बार से और कुछ भी like wash नहीं करती हूँ. I just wash my face with it. For like when I take a bath, I use a body lotion, but for my face, I use the soap because it is just a very very mild soap, and I have extremely sensitive skin, so I prefer like the mildest of stuff for my face, especially. The next step is to moisturize, which is extremely important because as soon as I wash my face, my skin starts to tighten up. So it is very important for me to moisturize. I cannot live without a moisturizer. This is the Cetaphil moisturizer for very dry and sensitive skin. So it is basically perfect for me, and I apply a very generous amount to my face because I just cannot compromise on the moisturizer part. And this is basically all I put on my face, like skincare wise. And अभी मेरा rice water toner बना नहीं है. Otherwise, I have my DIY rice water toner, which I also put on my face. And other than that, nothing much. After this, I'll just close the dabba. Then the next step is Vaseline. This is the cocoa butter Vaseline, and I love this one because it smells extremely yummy. And this is like my favorite Vaseline. I also like the pink tinted one, but this is just my personal favorite. The cocoa butter one is just. And I also have Vaseline cocoa butter body lotion, which I put on after I take a bath, and that also smells so delicious. Like, I just love it. Now I'm done with my skincare routine, and yes. So the next step in my like night routine is to clean up my space. And as you know, we just like worked up for like 2 hours or something, and इसीलिए अभी मेरी desk बहुत ज़्यादा messy हो रखी है. So I'll पहले clean my desk, and उसके बाद I'll decide कि मेरे को sectors of the Indian economy अभी करना है या फिर I should sleep. So let us clean first. When I clean, I like to play some music because it just makes the entire process much more fun. And I think we're going to play some Hindi music, and I mean Punjabi because it's Diljit. So anyways guys, now that I've done my night routine, it is extremely difficult for me to go back to studying. First of all, 12 o'clock होने वाले हैं, and I think I should sleep because my sleep schedule is also extremely important, and I'll try to wake up early tomorrow and then we will study. So let us really hope that I can wake up early tomorrow because we know me, I know me, and it has never happened कि मैंने अपने वीडियो में बोला हो कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगी और मैं एक्चुअली मैं सुबह जल्दी उठी. But trust me guys, I promise you all, मैं कल सुबह जल्दी उठने वाली हूँ, and we are going to lock in. Yes, and I mean it. Please, I hope, I really hope मैं उठ जाऊँ. Anyways guys, good night. I'll see you all in the morning. Guys, I have woken up and अभी 10 बज रहे हैं. I know I promised that I'll wake up jaldi, but I think that I'm just not meant for it. And 10 बजे से पहले उठना मेरे लिए is like a crime. And I'm not even kidding. I woke up at 6. Like मेरी eyes खुल गई थी. Then after exactly 1 second,
I slept again. And you can still see that I still look very sleepy, even though I've already like done my morning cheeses like brushing and all of that. So yeah. Also, I'm filming from a different phone, so if the quality is a little cheaper, please forgive me, because this is the only way to film right now because I don't have my other phone. So yes, and first of all, we are going to have our breakfast before we start studying because it's already 10 and I don't want to start taking my breakfast at like 12 because that is not good. So let's just go take my breakfast. So here is my breakfast and I will eat Netflix dekhte dekhte because I always need to watch something while eating. And after I was done eating, I was drinking my milk and I started doing SST. I was completing sectors of the Indian economy जो कल complete नहीं हुआ था, and मैं पहले दिगराज सर का lecture देख के पढ़ने की try कर रही थी, but उसके बाद मेरे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ याद भी नहीं हो रहा था, so I decided to read from the NCERT खुद से because I felt उससे मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद होगा. And also थोड़ी देर पहले I just killed a मक्खी because it was irritating me a lot. Anyways, yes, मैं बोल बोल के पढ़ रही थी ताकि मेरे को याद हो जाए मैं जो पढ़ रही हूँ. एंड इट वॉज जस्ट अ वेरी लेंदी चैप्टर इन माई ओपिनियन क्योंकि मेरे को पूरा कंप्लीट करने में एक घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था. आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 घंटा. बट येस, बीच बीच में लाइट भी गई थी, बट आई कम्प्लीटेड माई चैप्टर एंड आई डिड नॉट स्टॉप विदाउट डूइंग इट. सो येस, आई वॉज जस्ट रीडिंग फ्रॉम दी NCERT ओनली, ज़्यादा कुछ मैंने डिफरेंट नहीं किया. सो गाइज, नाउ आई हैव कम्प्लीटेड मेरा SST का काम एंड फाइनली मेरी पूरी टू रोलर स्कल की कम्प्लीट हो चुकी है. एंड आई एम सुपर ग्लैड नाउ मोस्ट ऑफ माई सिलेबस इज कम्प्लीटेड बिकॉज ऑल द चैप्टर्स विच आई डिड yesterday were like one of the only chapters which were left. And today I think I will focus on literature and like I will focus on literature and I will also revise physics. मैथ्स का तो मैं UT दे ही नहीं रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप. सो मैथ्स वैसे सिलेबस में जो है वो पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन दैट फ्रॉम लाइक ऑल ऑफ द रेफरेंस बुक्स. सो मैथ्स में हम जो डूइंग एक्स्ट्रा सिलेबस टुडे आई ट्राई टू कंप्लीट द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड आई विल ऑल्सो फोकस ऑन कंप्लीटिंग सम एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस ताकि मेरे को लाइक बाद में बेनिफिट हो क्योंकि जितना सिलेबस में है उतना मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. अब मेरे को सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. एंड SST में जो चैप्टर्स मेरे प्रीवियस UT में आए थे वो मैंने रिवाइज नहीं करे, सो वी विल बी रिवाइजिंग दैट एज वेल. ऑल्सो गाइज, एज यू कैन सी आई हैव नॉट येट मेड माई बेड, सो आई थिंक वी शुड मेक आवर बेड बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स. मेरा बेड काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा था, सो मेरे को अच्छे से सब कुछ साफ़ करना था ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगे मेरा रूम बिकॉज जब बेड लाइक ऑर्गेनाइज होता है सो दी होल रूम लुक्स ऑर्गेनाइज्ड. सो आई वाज जस्ट डूइंग ऑल ऑफ दैट. नाउ आई हैव टू गो टेक अ बाथ एंड इसलिए आई एम पिकिंग माई आउटफिट फॉर द डे. एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ दिस इज़ वॉट आई वोर. आई वॉज वेयरिंग अ वाइट Naruto की shirt. I've never even watched the show but I think the shirt is pretty cool and some grey shorts. I have done my skincare as well. Alright guys, so that's it for today's video. If you liked it, make sure to subscribe to my channel and also follow me on Instagram at the @ashtalksofficial because I post over there but I am not posting on YouTube. So that's it. I hope you enjoyed it. Bye bye.